kids, how are you all? Hope you are doing good. Welcome back to our EVS learning. Kids, in the previous video of chapter number 16, A Busy Month Part 1, we learned about bird's nest. In today's video, we shall continue with Part 2 and do some activities related to it and learn about animals and birds' teeth, their claws, their feet and their body parts. So let's begin with chapter number 16, A Busy Month, Part 2. So kids, here we begin with part 2 and we begin with observation activity. Observe the nest for some days and note down the following things. तो यहाँ पे आपको नेस्ट को ऑब्जर्व करना है जो तुम्हारे घर के आसपास बनाया है बर्ड्स ने, और फिर नीचे जो क्वेश्चंस दिए उसके आपको आंसर्स लिखने हैं. सो सी द फर्स्ट वन, वेयर इज़ द नेस्ट मेड. ये जो नेस्ट है वो कहाँ बना है. सो on the branch of a tree. The nest is made on the branch of a tree. What is the nest made of? So the nest is made of many things like roots, soft twigs, dry leaves, hair, cotton wool, pieces of wire, etc. Is the nest ready or are the birds still making it? क्या nest ready हो चुका है या फिर birds अभी भी nest बना रहे हैं? So yes, the nest is ready. Can you recognize which bird has made the nest? क्या आप recognize कर सकते हो कौन से bird ने ये nest बनाया है? So for example, the nest is made of pieces of wire, so maybe the crow has made the nest. So crow has made the nest. What things does the bird bring to the nest? What all things does a bird bring to the nest? So the bird brings small insects or pieces of roti or grains to the nest to feed its chicks, right? उनके बेबी बर्ड को खाने के लिए. इज़ देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट. क्या नेस्ट पे कोई बर्ड अभी बैठे हैं? सो येस, देयर इज़ अ बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट. डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट. क्या आपको लगता है कि नेस्ट में कोई एग्स है? येस, देयर आर 2 एग्स इन द नेस्ट. कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट. Yes, I can hear some sound like chee chee from the nest because the bird is sitting in the nest, so obviously we can hear the sound. If there are chicks in the nest, what do the parent birds bring for them to eat? अगर कोई चिक है, बेबी बर्ड है नेस्ट में, तो उनके जो पेरेंट बर्ड है वो उनके खाने के लिए क्या लाते हैं? सो एज आई टोल्ड यू बिफोर, द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग grains, pieces of roti, small insects for the chicks to eat. How many times in 1 hour do the birds come to the nest? So you have to observe this. मतलब 1 hour में birds जो है अपने nest में कितनी बार आते हैं? They may come 2 to 3 times to the nest in 1 hour as to feed their baby birds, right? After how many days did the chicks leave the nest? जो chicks है वो अपने nest कितने दिनों के बाद लिव करती है, छोड़ देती है? द चिक्स लिव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे आफ्टर अबाउट 1 month because they become strong during that time. Their wings also become strong. Okay, so here we complete our observation activity. I have given you examples that how you have to write the answers. Now you may observe the nest around your house and you may write the answers. Okay, moving further, make a picture of the nest in your notebook. Now you have to make a picture also of a nest in your notebook. Second, you have seen how birds use many different things to make their nest. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. So आपको पता है कि nest कैसे बनता है, right? Now how birds uses the nest. So you may also try use these things and try to make a nest. This is an activity for you. You may also make a small paper bird so that it would look like a nest. Okay, birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. Now we all know that birds जो है वो अपने nest इसलिए बनाते हैं because ताकि वो अपने eggs जो है वो nest में lay कर सके, और जब eggs hatched हो जाते हैं और chicks जो है वो grown हो जाते हैं तो वो अपने nest छोड़ देते हैं. Imagine how it would be if we also had to leave our homes as soon as we learn to walk and talk. So kids, now just imagine once you are able to walk and talk and you also had to leave your homes, how would it be? So what would you do, kids? Obviously if we have to leave our house,
we won't be living independently like birds and animals do, because we need education, we need good food, good housing, and other materials. They become strong in 1 month, but we take ages to become strong, right? So then we have to live a life similar to that of birds and animals. So that's just an imagination, but you could imagine and think about it, okay? After they leave their nest, different kinds of birds live at different places. Some on trees, some near or in water, and some on land. So जब अपने नेस्ट छोड़ लेते हैं, वो लोग ग्रोन अप हो जाते हैं, फिर अपने नेस्ट छोड़ देते हैं, बट देन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स जो है वो अपने नेस्ट बनाते हैं डिफरेंट प्लेसेस पे. कुछ ट्रीज़ पे बनाते हैं, कुछ पानी के नज़दीक में बनाते हैं, कुछ पानी के अंदर बनाते हैं, कुछ लैंड पे बनाते हैं, राइट? Other animals also live at different places, on land, under the ground, in water and on trees. So जैसे birds रहते हैं different places पे, वैसे animals भी अपना घर different places पे बनाते हैं. कुछ लोग ज़मीन पर, कुछ लोग under the ground, कुछ लोग water में, कुछ लोग trees पे, right? So kids, we learned about birds' nest, their homes, right? Now let's learn about birds' paws, different kinds for different needs. You can see in the picture that all birds don't have same type of feet. There is a variety in feet according to their uses. Now look at the first picture. Over there it is written to swim in water. So ये जो पिक्चर दिया हुआ है हमें, ये वेब्ड फीट का पिक्चर दिया हुआ है. ये जो टोज़ है वो कनेक्टेड है फ्लेक्सिबल स्किन के साथ, दैट हेल्प बर्ड्स टू स्विम, लाइक ducks, swans. Due to such feet, they can swim easily in water. Now look at the second one, to hold the tree branch. Now these are perching feet. जो birds के पास perching feet होते हैं, वो लोग easily branch को, tree के जो branches है उनको hold कर सकते हैं. उनके पैरों में special hind toe रहता है जो back of the branch को पकड़ के रखता है, और जो front toe रहता है वो आगे का part अच्छे से पकड़ के रखता है, और ये help करता है bird को branch के ऊपर securely बैठने के लिए. Example, crow or parrot. Now look at the third picture. To catch the prey, what it hunts. इसे ग्रीपिंग फीट बोलते हैं. The feet of birds of prey such as eagles, vulture, falcon, etc. ये जो फीट पे जो क्लॉज रहते हैं ना, वो बहुत शार्प रहते हैं, और वो लोग है ना ईजिली अपने प्रे को कैच कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, उसका ग्रिप पकड़ सकते हैं. Now look at the fourth picture. To walk on the land. Now there are birds which are small birds, they usually hop on the ground, like, and there are larger birds, they walk and run on the ground. So जो ostrich, you can take an example of an ostrich. They have such type of feet, right? They have hoof like feet and long muscle legs, so that it helps them to walk on the ground and run. Okay, now see the last one, to climb the tree. These type of feet normally has like a woodpecker or a barbet, जिसके sharp है ना नखून होते हैं, nails रहते हैं, ताकि वो लोग easily branch को hold कर सके और वो चढ़ सके ऊपर. Now moving further, bird's beak according to the food. As I told you, all birds do not have the same type of beak. There is a variety in beaks according to their uses. Like for example, first one, to tear and eat meat. Now ये जो ईगल के बीक रहते हैं ना, वो बहुत ही हुक्ड रहते हैं, जो वो ईजीली है ना अपने खाने को रिप और टेयर कर सकते हैं. लुक एट द सेकेंड पिक्चर. टू मेक होल्स इन द वुड एंड ट्री ट्रंक. वुडपेकर के जो बीक्स रहते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम वुडपेकर ले, बिकॉज इट मेक्स होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स, राइट? सो उनके जो बीक्स रहते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी रहते हैं, एंड उनके बीक के टिप पर एक चीज़ल जैसा रहता है जो वो इजीली है ना ड्रिल करके होल बना देता है वुड के अंदर. सो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. नेक्स्ट पिक्चर, टू सक नेक्टार फ्रॉम फ्लावर्स, लाइक हमिंग बर्ड्स. जो हमिंग बर्ड्स रहते हैं ना, उनके जो बीक रहते हैं वो लॉन्ग रहते हैं और नीडल लाइक रहते हैं, ताकि वो लोग है ना डीप फ्लावर में जाके नेक्टार जो है वो सक कर सके. नेक्स्ट, टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, लाइक स्टॉक के पास है ना स्ट्रेट लॉन्ग टाइप ऑफ बीक्स रहती है, जो वो इजीली है ना इंसेक्ट्स को ग्रैब कर सकती है. इट कैचेस फिश, फ्रॉग्स ऑल्सो फ्रॉम द मड एंड द शैलो वाटर. नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ टू ब्रेक एंड क्रश सी. Now they are also known as crushing beaks, as you know most of pigeons and sparrows have crushing beak. They have short and hard beaks and they are used for crushing grains and seeds
to make it soft. The next is to cut and eat many kinds of food. Like crow, they can eat fruit, insects, fish, etc. Their beaks are strong and sharp. उनके ना बहुत ही strong और sharp beak रहते हैं जिससे वो easily चीज़ों को कट करके खा सकते हैं. Moving further, now we have completed beaks. Now let's go to animals' teeth. You have seen that animals have different types of teeth. Each animal has different teeth. Okay, now see the first one. Cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. Now cow के बारे में बात करें तो cow के जो front में है ना short teeth रहते हैं ताकि वो grass को snip कर सके. Snip means टू कट, ओके, ताकि वो ग्रास को कट कर सके. एंड उनके साइड्स में है ना बड़े बड़े दांत रहते हैं जो बहुत फ्लैट रहते हैं ताकि वो इजीली च्यू कर सके ग्रास को. इंटरेस्टिंग, राइट? नाउ लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कैट. Cats have sharp teeth for tearing and cutting meat. Now cats के teeth जो रहते हैं वो बहुत sharp रहते हैं ताकि वो easily tear और कट कर सके मीट को. Snakes have sharp curved teeth but they do not chew their prey. Snakes always swallow their food whole. So snakes के पास भी है ना sharp और curved teeth रहते हैं, right? But वो लोग है ना कभी भी अपने prey को chew नहीं करते हैं. मतलब जो भी वो खाते हैं चीज़ें उसको chew नहीं करते, वो लोग always swallow करते हैं. Squirrels' front teeth keep growing throughout their life. They have to keep gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. Squirrels एक ऐसे एनिमल है जिनके teeth है ना थ्रू आउट देयर लाइफ है ना ग्रो होते रहते हैं एंड उनको है ना gnawing करना पड़ता है. What is the meaning of gnawing? Means to bite or chew on with the teeth. Okay? किसी भी चीज़ को chew करना या तो bite करना teeth से ताकि उनके जो टीथ है वो लॉन्ग ना होते जाए, राइट? सो सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ. इंटरेस्टिंग, राइट? सो हियर वी कंप्लीट एनिमल्स टीथ. नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट योर टीथ. फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट. तुम्हारे टीथ के बारे में फाइंड आउट करो. सबसे पहले योर एज, तुम्हारा एज यहाँ पे लिखना है. हाउ मेनी टीथ्स डू यू हैव, कितने टीथ है तुम्हारे पास. हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन, हाउ मेनी. कभी तुम्हारे टीथ जो है वो गिर गए हैं तो कितने गिरे हैं. सो राइट इट डाउन. हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव, कितने न्यू टीथ तुम्हारे आए हैं. हाउ मैनी ऑफ योर मिल्क टीथ हैव फॉलन बट नो न्यू टीथ हैव कम इन देयर प्लेस. तुम्हारे जो दूध के दांत हैं वो गिर गए हैं लेकिन कोई नए दांत नहीं आए हैं. ओके, सो यू मे राइट डाउन. फाइंड आउट मोर अबाउट द टीथ. सो हियर आपको आपके फ्रेंड के टीथ के साथ कंपेयर करना है कि तुम्हारे फ्रेंड के टीथ और तुम्हारे टीथ सिमिलर है या नहीं शेप में. फ्रंट टूथ और बैक टूथ का आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाना है और डिफरेंस बताना है. तो डिफरेंस ये है कि जो फ्रंट टूथ है वो मे बी शायद थीन होगा या तो बैक टूथ है वो थोड़ा वाइड होगा. ओके, जिसको हम मोलार कहते हैं. नाउ दे आर आस्किंग यू टू इमेजिन इफ़ यू डिड नॉट हैव फ्रंट टीथ बोथ टॉप एंड बॉटम, हाउ वुड यू ईट अ गुआवा. एक्ट एंड शो. सो किड्स, नॉर्मली हमारा जो फ्रंट टीथ है ना उससे हम ब्रेक कर सकते हैं, राइट, पीसीस ऑफ गुआवा. पर अगर तुम्हारे फ्रंट टीथ नहीं होते तो तुम क्या करते, कैसे ब्रेक करते. एक्ट करके दिखाओ. यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक. समवन गिव्स यू अ रोटी, हाउ वुड यू ईट इट. शो. नाउ किड्स, तुम्हारे जो फ्रंट टीथ रहते हैं वो तुम्हें बाइट लेने में हेल्प करते हैं, राइट, लेकिन जो तुम्हारे बैक टीथ रहते हैं वो तुम्हें च्यू करने में हेल्प करते हैं. सो अगर तुम्हारे फ्रंट टीथ है पर तुम्हारे बैक टीथ नहीं है और तुम्हें कोई रोटी देता है तो तुम कैसे च्यू करोगे. सो ऑब्वियसली यू हैव टू स्वॉलो, but you know directly if we swallow it will be difficult to digest also, so that is also problematic. So teeth are important. You do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? So here they are saying कि तुम्हारे पास टीथ ही नहीं है तो तुम कौन सी चीज़ें खा सकते हो. So obviously you will be able to take only liquid, okay, और semi solid food like rice है, right, rabdi है, right. You can also have pulses, okay. Now you have to draw a picture of in your notebook that how would you look if you had no teeth. So do draw it. Find out from old people, those who do not have teeth, what kind of food they cannot eat. अभी old people से तुम्हें जाके पूछना है कि जिनके पास दांत नहीं है वो लोग कौन सी चीज़ें नहीं खा सकते. सो ऑब्वियसली दे कैन नॉट ईट भाकरी, रोटलो, देन यू नो राइप फ्रूट्स, पापड्स. इट्स वेरी हार्ड टू च्यू, सो दे वोंट बी एबल टू ईट दैट.
Now draw a picture of a bird commonly seen in your area. Label its body parts also. So आपको एक बर्ड का पिक्चर बनाना है और उनके बॉडी पार्ट्स को लेबल करना है. So here I have done it for you. You can see it over here. I have taken a picture of a parrot and you can see these are wings, these are feathers. Here is an eye. Yes, and this is a beak. Here is foot and here are the claws and this is a tail. And here we end our activity. So kids, here we end our learning of chapter number 16, A Busy Month, Part 2. Kids, I hope you have understood this chapter very well. I hope you are able to recognize the animals and birds and their beaks, their feet, their claws, their eating habits, their homes and etc. Kids, one more very important thing is that we should conserve animals and birds. We should treat them with love and affection. I hope you will conserve birds and animals as they are also a living creatures. Bye. Take care. Have a wonderful day.